Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Abdul Wafar, Chairperson, Department of Mathematics, Ghazi University, Dera Ghazi Khan. Title of today's talk is Research Paper Writing Process. When we discuss the purpose of this topic, to provide students with a step-by-step guide for planning, writing, and finalizing a research paper at university level. And when we discuss its objective, identify the essential step in research writing. Use campus resources effectively, apply the time management strategies for timely completion. These are few steps which are involved in writing a research paper. The first one is assignment clarification. When we discuss the key point of assignment clarification, first of all, we understand the instruction just like highlight the key direction, analyze, evaluate, argue, etc. Note deadline and required format. And then we discuss the assignment evaluation criteria. Understand how marks distributed. For example, argument, strength, research quality, and then we discuss the clarity of the assignment, ensure students to ask their instruction for clarification about the unclear aspects. The writing the research paper, the second important point is the time management. Time management techniques for a student when we discuss, first of all, we create a timeline. Break the research paper into stages. For example, topic selection, writing, revising. And also we have to set the deadlines. Assign the completion date to each stage. Daily, and also mention the daily task. Maintain a daily or weekly to do the list to stay organized. After time management, the third more important point is topic selection. How to choose a topic? First of all, we discuss the sources of inspirations, previous coursework, personal interest, current trends or professional experiences, refining the topics, ask critical questions. Critical questions means who, what, where, when, why, and then focus on a subtopic for manageable support. When we discuss these points, the fourth step involved in writing the research paper or research process is topic brainstorm. We discuss the brainstorming strategies, methods to generate ideas, in which we discuss the listing, write down all the potential ideas, create a visual diagram to explore the connections, write continuously for a set time to develop thoughts. And the
Fifth one is library visit. Benefit for visiting the library: access resources, use database, scholarly journal, and books. Ask expired, meet with the librarian for guidance on finding the credible sources. Learn the difference between the peer-reviewed journal and other materials. The sixth step, which is involved in writing the research paper, is locate and select sources. Tips for finding the quality sources. Academic focus: choose scholarly articles, books, and reputable websites. Read critically, skim abstract, and check bibliographies to assess the relevance and ensure sources are up to date and novel. The seventh more important step, which we use in our research paper or in writing the research process, is survey. Survey sources. Survey sources affect the skimming of technique. Read headings, subheadings, and summaries. Note important statistics, charts, and key findings. Skim to the introductory and concluding the paragraph for an overview. Topic focus, and then we discuss the topic focus. How to narrow down the topic, revisit the original topic, and refine it based on the initial findings. Make sure the narrowed topic support to the thesis or the research paper. And the ninth step, which involves in writing the research process, is read article. Reading and note-taking strategies for active reading. Highlight or underline the key points, paraphrasing, and summarize the ideas in your own words. Group ideas by themes or arguments. And the 10th step, which involve discovery of a preliminary thesis. Thesis statement formula: basically focus topic plus assertions is equal to thesis or research paper. For example, when we discuss the word topic, impact of coal fire on the environment, when we discuss in terms of thesis, coal fire contribute to global warming, position water supplies, and anger communities worldwide. The 11th step in writing the research paper is outline. Step build on outline. This is the main points, break point into sub-points, follow the logical flow, introduction, body, conclusion, and we discuss the example structure, define the topic and present the thesis, discuss the argument and evidences, and summarize the finding and strategy to the thesis. The more important thing or more important step writing the research paper is drafting. Tips for writing: write the section based on the outlines, continuously refer to the thesis for consistency, integrate sources with proper citations, do not aim for perfection, focus on completing the draft, integrating the sources, best practice, use a mix of direct quotes, paragraphing, and summaries. Always cite sources to avoid the plagiarism. And then check the content check in the thesis, clear argument,
well supported, clarity, ensure smooth transaction between the ideas, technical deadline, proofread for grammar, punctuation, and citation accuracy. The 15th step in the research is the sources of help. Encourage the student to seek support. For example, the professor asks for the guideline of the thesis development and structures, and we discuss the word librarian, get help finding and evaluating the sources. And when we use the word tutor, use writing center for feedback and peer review, exchange draft, classmate for the constructive criticism, and finally, writing the research paper is a systematic process involving planning, execution, and revision. Writing the research process or research paper writing process is a systematic process involving planning, execution, and revision. Encourage the student to follow these steps methodologically for better result. Highlight the importance of the campus sources and time management. This detailed version is structured for the delivery. Included the actionable tips, example, and step-by-step guideline. And now I would like to explain this thing in Urdu. Research paper लिखने का अमल, research paper writing process mean research paper लिखने का अमल. When we discuss this thing, first of all, we discuss the objective. तोलबा को रिसर्च पेपर की मनसूबाबंदी, लिखाई और नजरसानी के मरहलेवार अमल से आगाह कर, और इसके जो अहदाफ हैं, तहकीकाती तहरीर के ज़रूरी मलाहिल की निशानदही और उनकी वजाहत, जामिया के वसाइल का मौसर इस्तेमाल, वक्त की बेहतर इंजाम की हिकमत अमलों का इतला. तो इसमें सबसे पहले जो असाइनमेंट क्लैरिफिकेशन है, असाइनमेंट की वजाहत है. अगर हम असाइनमेंट की वजाहत के अहम नुकात डिस्कस करें तो कलीदी अल्फाज जैसे तजिया करें, जांचें, दलील दें को नुमायां करें. फिर डेडलाइन और फॉर्मेट के तकाजे नोट करें, जायज़ा के म्यारात को देखें कि किस पहलू पर कितने नंबर दिए जा रहे हैं, मसलन दलाइल की मजबूती, तहकीक के म्यार. वजाहत तलब करें, किसी भी गैर वाज़ेह पहलू के बारे में उस्ताद से सवाल करें. और जो दूसरा हमारा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट, इसे उर्दू में हम कहते हैं वक्त का इंतज़ाम. तलबा के लिए जो तजावीज़ हैं कि टाइम लाइन बनाएं, तहकीकाती अमल को मरहलों में तकसीम करें, जैसे मौज़ू का इंतखाब, लिखाई, नजरसानी, और फिर डेडलाइन मुकर्रर करें. हर मरहले के लिए मुकम्मल करने के लिए तारीख तय करें. रोज़ाना या हफ्तावार फहरिस्त बनाएं ताकि मुनज़्ज़म रहें. और जो थर्ड स्टेप है टॉपिक सिलेक्शन, इसे हम मौजू का इंतखाब कहते हैं. मौजू मुंतखब करने के तरीके, मौजूआत के ज़राए, कोर्स का मवाद, ज़ाती दिलचस्पियाँ, मौजूदा रुझानात या पेशा वराना तजर्बात. मौजू को बेहतर बनाने के लिए अहम सवालात करें. कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों. ये वो सवालात हैं जो आपके मौजू को बेहतर बना सकते हैं. कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों. ज़ैली मौज़ूआत पर तवज्जो मरकूज करें ताकि दायरा कार महदूद हो. आइडियाज़ जमा करने की हिकमत अमली, ख्यालात पैदा करने के तरीके, यानी कि जब हम बात करते हैं कि टॉपिक ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसका मतलब क्या होता है? आइडियाज़ जमा करने की हिकमत अमली के ख्यालात पैदा करने के तरीके. उनकी सबसे पहले क्या बनाएं? फहरिस्त बनाएं. मुमकिन ख्यालात लिखें, उसकी नक्शा साजी करें. ख्यालात के दरमियान ताल्लुक को समझने के लिए बसरी खाका बनाएं. आज़ादाना लिखाई, चंद मिनट तक ख्यालात को बगैर तरतीब के लिखें. और जो इसका 5वां पॉइंट है लाइब्रेरी विजिट, लाइब्रेरी का दौरा करें. लाइब्रेरी के जो फ़वाइद हैं वो ये हैं कि वसाइल तक रसाई है, आपकी डेटाबेस, अमली जरायद और किताबों का इस्तेमाल करें.
ठीक है ना। लाइब्रेरी से काबिल एतमाद ज़राए तलाश करने में मदद लें। हम मर्तबा जायजा शुदा जरायद और दीगर मवाद में फ़र्क सीखें। और जो इसका छठा पॉइंट है, लोकेट सेलेक्ट सोर्सेज, जराए का पता लगाना और मुंतखब करना। न्यारी जराए तलाश करने के लिए नुकात, इसके लिए हमारे पास क्या, सबसे पहले हम एक वर्ड यूज करते हैं, इल्मी तवज्जो। हम मर्तबा जायजा शुदा मज़ामीन, किताबें और मोतबर वेबसाइट मुंतखब करें। तनकीदी जायजा लें, खुलासे पढ़ें और हवाला जात की फहरिस्त चेक करें। इतबार की जांच यकीनी बनाएं कि ज़राए हालिया और मुस्तनद हैं। और सातवां जो पॉइंट है, सर्वे ऑफ सोर्सेज, ज़राए का जायजा लेना। मौसर तरीके से जायजा लेने की जो तकनीक्स हैं, अहम इदाद शुमार और चार्ट्स नोट करें, तारफी और इख्तितामी पैराग्राफ पढ़ें। तो उसके बाद आप जो भी रिसर्च पेपर हैं उनका एक किस्म का आपका सर्वे हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, टॉपिक पर फोकस करना है, मौजू पर तवज्जो मरकूज करना। टॉपिक फोकस का मतलब क्या होता है, मौजू पर तवज्जो मरकूज करना। मौजू को मजीद महदूद बनाने के तरीके, गहराई में जाएं, असल मौजू का जायजा लें और मजीद वजाहत करें। मुताबिकत यकीनी बनाएं, महदूद मौजूद थीसिस की हिमायत करें। इसका जो पॉइंट 9 है, जिसको हम स्टेप 9th स्टेप कहते हैं, रीड आर्टिकल, पढ़ाई और नोट लेना, फाल मुताले की हिकमत अमली। अहम नुकात को हाईलाइट करें, पैराफ्रेज करें, ख्यालात को अपने अल्फाज में लिखें, नोट्सों को तरतीब दें, ख्यालात को मौज़ूआत के लिहाज से तरतीब दें। और फिर हम क्या कहते हैं जी, प्रीलिमिनरी थीसिस या प्रीलिमिनरी जो रिसर्च पेपर है उसका आप तर्जुम करें। और उसकी जो एक स्टेटमेंट है, उसका जो फार्मूला होता है, महदूद मौजू प्लस दावा, ये बेसिकली क्या बनता है, थीसिस बनता है। यानी थीसिस जो है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, एक आपके जो महदूद मौजू हैं प्लस आपका जो दावा है। मिसाल मिसाल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि मौजू, कोयले की आग का माहौलियाती असर। अगर हम थीसिस की बात करें, कोयले की आग ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा करती है, पानी के ज़खायर को जहरीला बनाती है और कम्युनिटीज़ के लिए ख़तरा है। तो ये इसी तरह आप उसका कोई मौजू बना सकते हैं। फिर आपने क्या करना होता है, आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब क्या होता है, खाका तैयार करना। खाका बनाने के मराहल, अहम नुकात की फहरिस्त बनाएं, नुकात को ज़ैली नुकात में तकसीम करें, मंतकी भाव पर अमल करें, तारुफ, मवाद, नतीजा, ये सारी चीज़ें जो मिसाली ढांचा है, जो मौजू की, यानी कि उसमें तारुफ आपने करना है, यानी मौजू की वजाहत करें और थीसिस पेश करें। अहम नुकात, दलाइल और शवाहिद पर बात करें, नताइज का खुलासा और थीसिस का इरादा करें। 12वां हमारे पास क्या होता है, ड्राफ्ट पेपर, जिसे हम कहते हैं मसवदा तैयार करना। ठीक है ना, जो लिखने के लिए आपने कुछ लिखना है, उसका मसवदा आपको तैयार करना है, ड्राफ्टिंग करनी है। फाका के मुताबिक हिस्से लिखें, मुश्किल मिजाजी के लिए थीसिस का हवाला देते रहें, हवाला जात के साथ साथ जराए को शामिल करें, कमाल परस्ती से बचें, मुकम्मल करने पर तवज्जो दें। और जो 13 है वो है रिवाइज द पेपर। ठीक है, जो आपके बरह रास्त हिसाबात हैं, पैराफ्रेजिंग है, खुलासे का इम्तजाज इस्तेमाल करें, हवाला देना लाजमी है ताकि प्लेजरिज्म से बचा जा सके। और जो आपके पास 14 पॉइंट ये भी है कि नज़रसानी जो चेकलिस्ट है, उसको मौसर नज़रसानी के लिए कि मवाद की जांच, क्या थीसिस वाज़ेह है, क्या दलाइल मजबूत हैं, ख्यालात के दरमियान में हमार मुंतकली यकीनी है, तब ग्रामर, रमूज, औकाफ और हवाला जात की दुरुस्ती चेक करें। और फिर हम कहते हैं कि सोर्सेज ऑफ हेल्प को तलबा की हौसला अफजाई करें करें कि, यानी कि उसमें एक तो हमारे पास असातिज़ा हैं, उनसे रहनुमाई लें, थीसिस की तरक्की और साख्त पर मशवरा लें। जो लाइब्रेरियंस हैं उनसे ज़राए तलाश करने और उनका जायज़ा लेने में मदद लें। जो ट्यूटर्स हैं, यहाँ पे तहरीरी मराकज़ से राय लें। और जो आपके पीयर्स हैं, जिसे हम जमात कहते हैं, तमीरी तनकीद के लिए ड्राफ्ट का तबादला करें। और फिर उसका जो अख्ताम है, रिसर्च पेपर लिखना एक मुनज़्ज़म अमल है जो मनसूबा बंदी, अमली दरामद और नजर षानी पर मुश्तमिल है। तलबा को इन मराहल को मुनज़्ज़म तरीके से फॉलो करने की तरगीब दें। जामिया के वसाइल और वक्त के बेहतर इंतजाम की अहमियत पर
These are following steps which are involved in writing the research paper. इसके साथ ही अगर आप लोगों की तरफ से कोई क्वेश्चन है तो ठीक, अदरवाइज इस यहाँ पे हम आपका इसका इख्तिताम करते हैं.